Jagadu students. To students, today in the economics class we are studying the chapter Indian economy on the eve of independence. Indian economy on the eve of independence we have started in the previous class also. That in that chapter you have studied what was the condition of Indian economy at the time of independence. That time we have taken the independence. That is in 15th August 1947 we have got the independence from Britishers. Britishers has ruled over in our country नियरली 200 ईयर्स 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारे देश पे राज्य किया एंड उस तरह से दे हैव एक्सप्लॉइटेड आवर इकोनॉमी वेरी मच एंड आवर इकोनॉमी इज नोन एज अ बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी. Britishers has exploited our different sectors, like Britishers has exploited the agriculture sector, Britishers has exploited industrial sector and other sectors also. So we are studying what was the condition of these different sectors during the time of independence. So in the agriculture sector, industrial sector, in the demographic condition you have studied in the earlier class. Now today I am going to tell you about what was the condition of occupational structure. Occupational structure, occupational means the people are engaged in different kinds of economic activities to earn their living. So what is the occupational structure? It refers to the distribution of working person across different industries and sectors. Means that working people of our country, those who wants to get employment and those who are able to work, they find employment in different places, like in industries and in other sectors of the economy. So that is known as the occupational structure of our country. During that time, during the eve of independence, our occupational structure was known as the predominance of primary occupation was there. That is, that time people are generally engaged in agriculture sector only. Means the predominance was of the this is a primary occupation, and major part of our people are living in engaged in that agriculture sector only. So predominance of primary occupation was there. That is, agriculture is a major occupation of the people of our country, and maximum part means 75 more than 75% people of our country are engaged in agriculture. And also there in occupational structure, the other next characteristic is regional variation is there. Regional variation, that in our country there are different states are there, but the dependence on agriculture is not equal everywhere. There are the states where the people are engaged in other sectors like manufacturing and other sectors, and there are the states the people are engaged in agriculture sector. States like Odisha, Punjab and Rajasthan, people are mostly engaged in agriculture. Means वहाँ के लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर वर्क पर ही डिपेंडेंट थे, एंड दे आर नॉट थिंकिंग एनी अदर ऑक्यूपेशन एक्सेप्ट एग्रीकल्चर. But rest of the parts of the country, the means dependence on agriculture was decreasing, and then the people are now started finding jobs in manufacturing sector, in industries, etc., and in other sectors also. So this is the occupational structure of the at the time of independence. That during the time of independence, the people are basically engaged in agriculture sector, and some people are also finds to work in other sectors, and they are not thinking of agriculture sector. So there are the people who are engaged in manufacturing sectors or in other occupational structure also. Now next is infrastructure. Infrastructure, student, infrastructure means it is the supporting services which help in doing any of the work. मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है वो सारी चीज़ें जो कि हमें किसी भी काम को प्रॉपरली करने में हेल्प करती हैं. जस्ट लाइक रोड्स आर देयर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर देयर, कम्युनिकेशन आर देयर, and different kinds of that infrastructure that is helping in doing a work particular work easily and smoothly. हम कोई भी काम करते हैं और अगर हम उसको मैनुअली करेंगे या बिना किसी चीज़ की हेल्प से करेंगे तो वी कैन नॉट डू successfully, and it takes time also. But if there are the services, supporting services are available to us, so the work can be done easily, smoothly and efficiently also. So इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि वो सारी सपोर्टिंग सर्विसेज जो कि हमें किसी भी काम को काम करने में हेल्प करती हैं, जैसे कि मशीनरीज हुआ, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हुई, रोड्स हुए, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हुई, एंड सो ऑन. सो दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर. During that time, the infrastructure development is not so good in our country. Whatever the infrastructure developed was only by the Britishers, and Britishers has developed some of the infrastructure in India, like roads. First of all, Britishers has developed roads. Britishers has manufactured roads, but generally they are making the roads only for their own purpose. They want to ship their Indian raw material to their country.
ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में रोड्स तो बनाई थी, लेकिन वहीं पर रोड्स बनी है जहाँ पर ब्रिटिशर्स के लिए आने जाने का प्रॉब्लम था, या ब्रिटिशर्स को अपने काम करने में प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। जस्ट लाइक अगर वो अपनी यहाँ से इंडिया से रॉ मटेरियल को अगर अपनी कंट्री ब्रिटेन में शिफ्ट करना चाहता था, दैट इज वाई ही इज मेकिंग द रोड्स, एंड in the different parts of the country, like the villages are there and underdeveloped part of the country, Britishers has not made any kind of roads there. रोड सिर्फ उन्होंने मेन जगहों पर ही बनाई थी जहाँ पर ब्रिटिशर्स के आर्मी को आने जाने में प्रॉब्लम हो, ब्रिटिशर्स के वर्क सफ़र ना करे। नेक्स्ट इज रेलवेज। यस, फर्स्ट टाइम रेलवेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर ओनली इन इंडिया, दैट इज इन 1850। 1850 में इंडिया ने ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवे सिस्टम स्टार्ट किया था, एंड बिकॉज ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ बिकॉज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेलवेज, the means transportation will be easy. Now we can go to any of the places, far of the places also from our country, and that is it is cheaper also. So Britishers has developed the railways in India, and railways are very much helpful for the economic development of the country also. Now air and water transport. Britishers has also introduced air and water transport in India, but it is an expensive one. So Britishers had not pay much attention on the development of air and water transport in India. Only they have started some of the water transportation so that they can ship the Indian raw material to the Britain, and from the Britain he will transfer finished goods to India. And also when they wants to move their army from one place to other, so that is why they have started the air and water transport. तो air and water transport का बहुत ज़्यादा contribution ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में नहीं किया था। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। Communications, in the name of communication, Britishers have started the post and telegraph system. कम्युनिकेशन के नाम पे ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम स्टार्ट किया था, बट इट इज़ द कॉस्टली वन। पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम वॉज कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव ऑल्सो, सो ओनली ब्रिटिशर्स आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर सिस्टम फॉर देयर ओन पर्पज, दैट इज ओनली फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। पोस्ट एंड टेलीग्राफ का यूज़ जो है वो सिर्फ ब्रिटिशर्स ही कर सकते थे, और ब्रिटिशर्स अपने लॉ एंड ऑर्डर को अपनी आर्मी को रन करने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन की स्टैब्लिशमेंट के लिए ही करते थे। So communication में post and telegraph system was developed in India during that time, and that was started by the Britishers. So this is the state of infrastructure in India, and this is the state of occupational structure in India. Occupational structure में जो था ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे इन्वॉल्व थे, एंड रीजनल वेरिएशंस थे, मतलब हर रीजन में एक जैसा नहीं था। कहीं पे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा मीन्स ज़्यादा उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था, और कहीं कहीं पर लोगों को जो जनरली जो लोग थे वो मैन्युफैक्चरिंग या दूसरे सेक्टर्स में भी जाने के लिए अब सोचने लगे थे। नॉट दे आर नॉट थिंकिंग ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ओनली, बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं थी, प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही थी, एंड ऑल्सो दे आर लैंडलेस लेबरर्स, तो बिकॉज ऑफ दैट दे आर थिंकिंग ऑफ डूइंग द वर्क इन अदर एरियाज ऑल्सो। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था कंट्री में उस टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे। देर आर द some of the infrastructure was established, and that too was established only by the Britishers, and Britishers have started these infrastructure for their own purpose, not for the Indians. So this is infrastructure development, that is Britishers has developed roads, but roads they were interested for their own purpose, that is उनका जो positive contribution जो था definitely, but ये सिर्फ उन्होंने अपने पर्पस के लिए किया था कि उनको आने जाने में प्रॉब्लम हुई थी, उनको अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम हुई थी, दैट इज व्हाई दे हैव स्टार्टेड रोड्स। दे हैव नॉट स्टार्टेड रोड्स फॉर इंडियंस, फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडियंस। नेक्स्ट है रेलवेज। रेलवेज भी ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया। रेलवेज ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट इसलिए किया ताकि इंडिया के रॉ मटेरियल को फॉरेन में शिफ्ट किया जा सके, और फॉरेन से फिनिश गुड्स को इंडिया में लाया जा सके। तो दैट इज व्हाई दे हैव स्टार्टेड रेलवेज, एंड ऑल्सो फॉर मूविंग एंड फ्रिक्वेंटली मूविंग ऑफ देयर आर्मी, so that they have started railways in India. And air and water transport में ज़्यादा कुछ contribution Britishers का नहीं था, but communication like post and telegraph they have started only because of communicating with their own country, and also with the communication in India to their army, and for also for law and order only. So these are the state of occupational and infrastructure development in India.